हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों अभी एक वीडियो मिला है मुझे जिसपे लिखा हुआ है कि नेपाल इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब नेपाल में इकोनॉमिक की क्राइसिस आई हुई है। क्या संकट आया हुआ है इस देश के ऊपर। नेपाल पे कभी ना कभी नहीं, हमेशा कोई ना कोई संकट आता रहता है। कभी बॉर्डर इश्यूज आते हैं, कभी मैप इश्यूज आते हैं, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी भूकंप आ जाते हैं और अब ये इकोनॉमिक क्राइसिस। तो चलिए देखते हैं क्या है ये इकोनॉमिक क्राइसिस और क्या है पूरा मामला, समझते हैं। वीडियो को देखते हैं एंड तक और फिर वीडियो के एंड में डिस्कशन करेंगे कि ये वीडियो सच है या झूठ है, वो हमें वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 1 2 3 go. For the first time in 60 years, Nepal has slid into a recession. People are facing the brunt of high inflation, something the government has zero control over because Nepal is import dependent. So how will the South Asian country come out of this crisis? Our correspondent Saloni Murarka decodes. Take a look. Nepal's economy is in an unprecedented downturn. Economists point at quarterly data which shows that the country has slid into recession for the first time in 60 years. People's livelihood in Nepal is largely being affected due to inflation, which is 7.4% year-on-year basis. The prices of goods, particularly essential commodities and land, are increasing at an exponential rate. We cannot ignore the high inflation rate and rising price. Earlier, it was tolerable, but for the last 2 years especially, the inflation rate has skyrocketed. Due to COVID, economic activities have come down to zero. It feels like the economy is dead. Due to the Ukraine war, the price of oil has gone up, and thus there's rise in inflation. In recent years, Nepal has been hardest hit by the liquidity crisis. To raise liquidity, the banks have raised the interest rate on the deposits to as much as 12%. This saw the lending rate shoot up to 14% and even more. As a result, neither bank deposits nor investments registered the expected growth. This shop is all I have. It is difficult to describe the situation here. The banks are not giving loans for my shop and I'm paying a higher rent than before. Every year landlords increase the rent by 10%. Even after having money in the bank, we are not getting loans. Due to the lack of meaningful job creation in the country, larger sections of the working population are forced to leave the country for work in other countries. Out of Nepal's 30 million, nearly 1,500 youth are leaving the country every day for jobs abroad. Despite some measures adopted by the government, the country's economic condition continues to worsen. Revenue receipts are hardly enough to meet the recurrent expenditure. Because of not having enough investment in the country, and second is our policy, fiscal policy and monetary policy, which are very loose, and those loans actually diverted into unproductive sector, and we have increased the unproductive expenses, recurrent expenditure in budget. Nepal has forecast that the country's economic growth rate this fiscal would be 2.16%. Never in the known history, Nepal's economic condition has been as severe as it is today. The country's main economic indicators, foreign exchange reserves, liquidity at the banking, the financial institutions, government revenues have all shrunk up at an unprecedented level. The gap between the trade of balance and the prices of consumer goods has skyrocketed. And still not single concrete steps have been taken by the government to fight the crisis that the country is facing. Economists have suggested the government to rule out new financial reforms and invest it wisely in the country. Saloni Murarka for WION World is One in Kathmandu, Nepal. तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने आज ये पूरा वीडियो देख लिया है नेपाल का, और नेपाल की इस वीडियो में हमें पता चला कि जो नेपाल है वो ये देखिए, कोई ना कोई हर कोई कुछ ना कुछ बता रहा है कि नेपाल के क्राइसिस के बारे में। नेपाल का जो ये हाल है, मतलब इतनी जो महंगाई हुई है, क्राइसिस जो आया है, ये 60 साल बाद कुछ ऐसा देखने को मिला है। मतलब 60 साल बहुत होते हैं, 60 इयर्स, उसके बाद जाकर के अब ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस आया है कि मतलब हर चीज़ महंगी हो गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। वो लेडी बता रही थी उसकी खुद की शॉप है लेकिन वो रेंट पे दे रखी है, और जो लैंडलॉर्ड है वो हर साल 10% उसका रेंट बढ़ा देता है। वो कहाँ से देगी रेंट? बैंक में पैसे हैं, बैंक वाले लोन नहीं दे रहे हैं, क्या हो गया है?
बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। इससे पहले कि हाल और ज़्यादा ख़राब होए, गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। इतनी महंगाई बढ़ गई है, तेल, सब्जी, चीनी, हर चीज़ पे तो महंगाई बढ़ते जा रही है। तो इस चीज़ को किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, इस पे जो सरकार है वहाँ की, उसको बैठ के इनका हल निकालना चाहिए कि क्योंकि जो वहाँ की आम जनता है वो लोग परेशान ना हो। इसी कारण, ऐसी परेशानियों के कारण ही लोग नेपाल से फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं, दुबई जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं, हर अलग अलग कंट्रीज में जाके वो लोग जॉब करते हैं, जिससे कि उन्हें जो परेशानी वहाँ पे वो परेशानी ना झेलनी पड़े। जॉब्स नहीं है, कहाँ जॉब करेंगे, जॉब अगर है तो उतनी सैलरी नहीं है, कैसे सर्वाइव करेंगे। इसके ऊपर गवर्नमेंट को ज़रूर कुछ सोचना चाहिए। बाकी आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, कैसी सिचुएशन है अभी नेपाल में। क्या सच में जो वीडियो में बताया जा रहा है ऐसा ही कुछ है कि हर चीज़ महंगी हो गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हद से पार हो गई है, अमीर लोग ही उसको अफोर्ड कर पाते हैं। जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वाले फैमिली है उन लोगों को एक टाइम का खाना वो लोग छोड़ के अपने दूसरे टाइम के खाने के लिए भरपूर कर रहे हैं। क्या यही हाल हो रखा है नेपाल में? आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि मुझे सच्ची कहानी और ट्रू स्टोरी पता चल सके। ओके दोस्तों, बाकी आप लोगों की यही रिक्वेस्ट है मुझसे, बाकी मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग अपना प्यार ही बरकरार रखिए, मुझे यही सपोर्ट करते रहिए, जिससे मैं ऐसी और भी ढेर सारे वीडियोस बनाऊँ और आप लोग के साथ शेयर करूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इस तरह की धमाकेदार पहुँच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।